Hello guys, welcome to another batch of ACCA FR. Today our agenda is to complete IAS 21 and IFRS 5, foreign currency and asset held for sale discontinued operations. So let's start first with IFRS 5. Uh, can you guess anything from the name of standard? What are we going to learn in this? I mean, asset held for sale discontinued operation, anything? Um, Mainly all about the selling that we do and the operations that might not needed in the company to perform well, Correct? and we are doing accounting for that. Nice. So standard is divided into two parts. Asset. What are we going to learn? Assets held for sale, non-current asset, long-term asset, which are we going to sell it out? And second is discontinued operation. How are we going to account for any department that is we are going to discontinue it? We are no longer going to continue. Yeah. So how are we going to accounting of that? So first, let's start understanding the accounting treatment of assets held for sale. IFRS 5, first part. So, what does definition say? Group of assets. For example, there are 5, 6 assets which are no longer needed in our company, and we are going to sell it out. Hmm. Group of assets must have at least one non-current asset. एक कोई नॉन करंट एसेट होना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म एसेट. Okay. ठीक है, दैट इज द कंडीशन सेट बाय IFRS 5. प्लस डायरेक्ट एसोसिएटेड लायबिलिटीज. फॉर एग्जांपल, सेम, आई हैव टेकन लोन टू परचेज दैट एसेट. अगर मैं एसेट ही बेच रहा हूँ तो लायबिलिटी उसकी एसोसिएट है, वो भी तो अकाउंट में आएगी, ग्रुप ऑफ दैट. Hmm. करेक्ट ना? फॉर एग्जांपल, I purchase the asset, non-current asset at 100 rupees, Right. $100. I've taken loan $40. Okay. ठीक है. तो asset held for sale, this means you have learned this concept of net realizable value, selling NRV. price less cost. Hmm. Correct. इसमें भी what are we, same logic, not same terminology but same logic. कि if I'm going to sell that asset, I'll get 120. Okay, for example, let's say 120, or it can be 80 as well, not कि appreciate ही होगा. तो अगर 120 में I'm selling, liability is of 40, so my net group of asset value will be what? 80 ना? 120 minus 40. क्योंकि हाँ. 120 मेरे को मिलेगा, आई विल रीपे 40 आउट ऑफ दैट, तो मेरे लिए तो नेट क्या हुआ? 18. 80. तो ये लॉजिक है कि डायरेक्टली एसोसिएटेड लायबिलिटी, मतलब उस असेट के एसोसिएटेड जो लायबिलिटीज हैं वो सारी आएंगी. इसमें इन्वेंट्री भी आ सकती है. हाउ Okay. इन्वेंट्री? क्योंकि इसमें लिखा है कि एटलीस्ट वन नॉन करंट असेट. इसका मतलब अगर कोई एक नॉन करंट असेट हुआ और बाकी सारे करंट असेट ही है, so that can also be considered as a one group. ठीक है. अब इन्वेंट्री, यू नो, दैट इज इन्वेंट्री विच इज समथिंग वी सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, हमारे बिजनेस को रेवेन्यू अर्न करने की. करेक्ट. Hmm. इन्वेंट्री परचेज करी क्रेडिट पे, इसका मतलब हमारा ट्रेड पेबल खड़ा होगा बुक्स में, करंट हाँ. लायबिलिटी में, तो वो डायरेक्टली एसोसिएटेड लायबिलिटी है. इसका मतलब अगर मैं इन्वेंट्री को सेल करूँ आज, उसकी वैल्यू 100 है, इन्वेंट्री आई एम सेलिंग एट 100 ओनली, सेम कॉस्ट वैल्यू, उसकी ट्रेड पेबल ऑफ 80, तो Hmm. व्हाट इज द नेट ग्रुप वैल्यू ऑफ ग्रुप ऑफ सेट? वो 20. Hmm. करेक्ट. बस वही है. Group of asset must have at least one non-current asset plus direct associate liability held for sale, that is known as disposal group. ठीक है. Right. Remember these terminologies: disposition, disposal group. ठीक है. Associated liability. So this is the definition.
Now, what are the condition that we can say that yeah, now this asset can be put on sale, and this asset has been held for sale. अगर अगर I have classified that asset की classify when carrying amount of an asset of disposal to be recovered. For example, I've decided कि ये जो 100 रुपए की कॉस्ट है, नॉन करंट एसेट कॉस्ट, I've decided कि हम्म, ये मैं इसको रिकवर कैसे करूंगा, प्रिंसिपली थ्रू सेल, मतलब सेल से ही करूंगा रिकवर। ओके। मैं इसको ऐसे नहीं यूज करके रिकवर नहीं कर रहा, आई मीन डेप्रिशिएट कर करके। डेप्रिशिएट क्या है? यूज एंड यूज, वेयर एंड टेयर, वी आर शोइंग स्प्रेडिंग द कॉस्ट ऑफ असेट टू द यूजफुल लाइफ, करेक्ट? ये मतलब होता है हम्म, डेप्रिसिएशन का। हम्म, इसका मतलब क्या है कि मैं यूज करके उसको नील कर रहा हूँ, या, करेक्ट? ये इसमें ये कह रहा है कि आई डिसाइडेड कि इसको मैं सेल करके रिकवर करूंगा वैल्यू, नॉट टू यूज। ठीक है, ओके। ओके। तो सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि प्रिंसिपली थ्रू सेल, ऑब्जेक्टिव ही होना चाहिए कि सेल के थ्रू रिकवर करूंगा, मोटो एजेंडा सब कुछ, इसको सेल करके रिकवर करूंगा। अब कैसे इसको सेल मान सकते हैं, क्या क्या कंडीशन है कि हाँ मैंने इस असेट को सेल के लिए रखा हुआ है। व्हाट आर द कंडीशन? फर्स्ट, अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल, मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट इन द नेक्स्ट सेकंड, द मोमेंट आई डिसाइडेड कि आई एम गोइंग टू recover this the value of asset principally through sale, and the next second I got the buyer, I'm going to sell it, इतना क्लियर डिसीजन होना चाहिए। ओके। ठीक है, इमीडिएटली फॉर सेल, नेक्स्ट सेकंड, हम्म, इमीडिएटली जब मिला, कौन से? उसकी प्रेजेंट कंडीशन में, करेक्ट? सेकंड, या, एंड ये एंड और नहीं है, मतलब ये तो सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये सारी भी होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि सारी होगी, बट सम ऑफ दो। ठीक है, सेल मस्ट बी प्रोबेबल, सेल मस्ट बी प्रोबेबल। अगर सेल प्रोबेबल दिख रहा है, सेल कैसे दिखेगा? सेल प्रोबेबल, इसका मतलब कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का कमिट प्लान है कि इसको सेल करना है, अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। हम्म, फिर एक्ट इनिशिएटेड एक्टिव प्रोग्राम टू लोकेट द बायर, बायर ढूंढना शुरू कर दिया। वो कैसे करेंगे? बायर ढूंढने के लिए क्या क्या कॉस्ट आ सकती है, आई मीन क्या क्या चीजें करनी पड़ सकती है, उससे पता लग जाए कि वी हैव स्टार्टेड इनिशिएटिंग द, फाइंडिंग द बायर। when it is ready, एडवर्टाइजमेंट, या, मैं एडवर्टाइजमेंट कर दिया, हेल्प फॉर सेल, ऑन सेल, सेल, कॉन्टैक्ट दिस नंबर, एनीथिंग। ये तो बहुत हाँ, ट्रेडिशनल अप्रोच हो गया, बट फिर भी बड़े बड़े होर्डिंग्स पे लगा सकते हैं, हेल्प फॉर सेल, एनीथिंग, करेक्ट? जैसे अभी आरसीबी फ्रेंचाइजी गॉट सेल, तो बहुत मार्केटिंग की ना कि वी वी आर पुटिंग आरसीबी फ्रेंचाइजी ऑन सेल, करेक्ट? हम्म, So the management has clear plan. Management has started initiated program to find the buyers. They want new owners. ओके। Management has decided a reasonable price. करेक्ट? मैनेजमेंट ने सोचा इसको मैं 120 पे तो बेचूं। आरसीबी गॉट सोल्ड ऑन 70,000 सीआर अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो मैनेजमेंट हम्म, ने डिसाइडेड इट्स रीजनेबल प्राइस, इतने में कोई खरीदना है तो बोलो, ऑक्शन होगा। उसमें तो ऑक्शन था, पूरा चेंज ही अलग है कि मैनेजमेंट ने डिसाइड कि 12,000 सीआर तो 40,000 सीआर से विल स्टार्ट आवर ऑक्शन। हम्म, The more somebody will bid, will sell it to those. राइट। Okay. Expected to be sold within 1 year. The moment I decided कि I've our set is available for immediate sale, उसके 1 साल में ही सेल हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका क्लासिफिकेशन कैसे होगा? जैसे ही हम्म, असेट मैंने डिसाइड कर लिया ना कि सेल है, सब कंडीशन मेट हो गई, तो जो नॉन करंट का असेट है ना, वो करंट असेट में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि expected to be sold within 1 year. So it's no longer it's my non-current asset, long term asset. It's my short term हम्म, asset now. तो मैं हम्म, कैसे दिखाऊंगा? नॉन करंट असेट से हटके वो करंट असेट में आ जाएगा। करंट असेट के हेडिंग में आ जाएगा असेट्स हेल्ड फॉर सेल, उसके उसमें लाइन आइटम आ जाएगी कि दिस आर द असेट्स व्हिच आर हेल्ड फॉर सेल विद इन 1 ईयर। राइट। ठीक है, एंड सिग्निफिकेंट चेंजेस टू प्लान आर अनलाइकली। ये ऐसा नहीं कि टुडे आई एम सेइंग कि आई पुट दिस फ्रेंचाइजी ऑन सेल, नेक्स्ट डे आई एम सेइंग नो, दे आर नो लॉन्गर सेलिंग इट। ऐसा कोई चेंज फालतू का इज नॉट,
It's not significantly likely to happen. Okay. Okay? That's, Understood the condition? yeah. Solve this question. Solve. Classify whether this asset is been put on sale or not. I mean, the conditions of set is getting satisfied or not. Yeah. Let me put side of front. Go ahead. Oxycam is the name of company. Yeah. You have to use the professional judgment a bit of it. Yeah. Just a moment. एक सेकंड होल्ड करना. Yeah. Yeah. Have you solved it? I think that the company should classify the factory oxygen as a group for sale because it's I think that it kind of shows in the present condition that they want to sell and it's available for sale. I don't know, I'm a little confused. One line can change the entire scenario. Therefore, Oxychem begins to consider alternative to selling the factory. Plus, yeah.
सब कुछ ठीक है, एग्रीड प्राइस है, बायर्स ढूंढने लग गए, बट व्हाट दे हैव डिसाइड, दे गॉट टू नो दैट जो फाइनल एग्रीड प्राइस है दैट इज बिलो द प्राइस दैट वर विलिंग टू सेल। हम्म। करेक्ट, इसका मतलब वो अल्टरनेटिव ढूंढने लग गए। दे व्हाट द मैनेजमेंट इज थिंकिंग, जहां से ज्यादा मिलेगा विल यूटिलाइज दैट वैल्यू। ऐसा नहीं कि वी आर गोइंग टू सेल इट आउट ओनली, अगर यूज करके भी कुछ हमें बेनिफिट मिल रहा है, बेटर ऑप्शन, विल वी कैन एक्सप्लोर दैट एज वेल। दैट्स व्हाट मैनेजमेंट इज ट्राइंग, दे आर व्हाट दे आर सेइंग, ऑक्सीकैम begins to consider alternative। क्यों? क्योंकि जो फाइनल एग्रीड प्राइस है दैट इज बिलो द एक्सपेक्टेशन दे वर विलिंग टू सेल। हम्म। करेक्ट। और यहाँ पे कंडीशन से दैट कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होना चाहिए, एंड हियर दे आर सेइंग दे आर सीकिंग अल्टरनेटिव। So it is not supposed to be held for sale. या सब कुछ ठीक है, बट वन सेंटेंस कैन चेंज द एंटायर थिंग। Understood. Try this one also. I think you can pick this up. Make sure you understand what the question is asking. Yes. In this question, I have to determine each number that it has met the criteria or not, or it's just one question. No, it's a one question entire, ऐसा कुछ Okay. criteria नहीं है। Okay. Done. No, this is not the entire question, this is individual wise। Immediately say available for sale है कि नहीं, the next question is full। Each point is not interrelated with each other, they are independent। Yeah. I think I'm done. Done? Yeah. First one? For the first point, I think that they are saying that the studio is available for immediate sale, Mm-hmm. as they need to vacate. Okay, It's an correct, emergency, correct। so will help for sale. Hmm. I'm a little confused about second one. I don't know the answer for that. MDM INC needs to construct a new studio to move to prior to vacate the existing one। So what they are saying कि the studio that they are planning to vacate, Hmm. for that they have to construct a new one so that they can vacate the old one।
So it's Okay. held for sale, na? Yeah, it's an immediate one. Yeah. The third one is no, because they are intending to transfer operations, including uncompleted orders, which is a bit more unlikely as per the last point. So that's why it's not held for sale. Very nice. मेरे को लगा था you will say कि 3 and 4 is also held for sale. Fourth Nice. one is held for sale because they are No, because intending. third is fourth is interrelated. What they're saying, basically a partial. कि वो कह रहे हैं कि the company intends to transfer the group, transfer the operation, including Hmm. incompleted orders. मतलब जो orders pending है वो कुछ नहीं, बस जाने दो उसको, हटाओ. And Okay. so TMC is saying it intends to transfer the disposal group after only complete after orders and operation is ceased. Third one is not. Fourth one is immediate for sale. That's what you said. You're correct. But incompleted orders का ये भी हम समझ सकते हैं कि अगर कंपनी ने ऐसा कुछ किया तो लीगल क्लेम्स आ सकते हैं, रेपुटेशन डैमेज हो सकता है. सो इट्स नॉट इमीडिएट, अनलाइकली है ये चीज होना कि Hmm. इनकम्प्लीट ऑर्डर कंप्लीट किए बिना यू आर shutting down your operations. It's not possible. It's not immediately possible. Yeah, it's possible, but it's ऐसा बहुत rare है. It's very rare. Right. This one. I think it's not held for sale. The third question. As per the question says that till in June 2014, the price is set at fair value, but during the month of October, the market deteriorated, and the JNT had an anticipation that the market will recover, but it did not. So the factory remain unsold. You're 80% correct. Just short of 20%. And I'll help you out with the 20%. See, क्या क्वेश्चन कह रहा है. सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड द कंडीशन. मैनेजमेंट का Hmm. प्लान है, कोई चेंजेस नहीं है, रीजनेबल प्राइस सब कुछ सेट किया हुआ है, प्रोग्राम्स इनिशिएट कर दिए हुए टू फाइंड द बायर्स, 1 साल में सेल हो जानी चाहिए एक्सपेक्टेड है. ठीक है, 5 Hmm. कंडीशन इमीडिएटली फॉर Hmm. सेल हुआ तो क्वेश्चन पढ़ के लग रहा है तेरा इंटेंस इज टू सेल, क्योंकि बाकी सब प्रोसेस शुरू कर दिया उन्होंने, एजेंट अपॉइंट कर दिया, प्राइस सेट कर दिया, ठीक है. बट 1 ईयर, विद 1 ईयर वो कह रहे हैं कि ठीक है, मार्केट डेटुएट हो गया, उन्होंने अपनी प्राइजेस की, दे केप्ट देयर प्राइजेस, बट Yeah. उनके पास टाइमलाइन है 1 साल का. Hmm. दे एक्सपेक्ट कि दे कैन सेल इट इन 1 ईयर. तो दे दे डिसाइडेड टू सेल इट ऑन 20 मई, और अभी तो दिसंबर ही हुआ है. लेट्स वेट टिल 30 मई ना. भले व्हाट इफ विद इन दिस 3-4 मंथ मार्केट रिकवर्ड,
till 31st December market is not recovered and they kept their prices, correct. But Right. agar if it was April, May, if it was 21st of May 2015 का मतलब 1 year has passed and Uh, still they kept their prices and the asset is not sold, इसका मतलब it's not held for sale. yeah, but in this it is held for sale. Yeah, Yeah, got it. क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है दिसंबर तक क्या सीन है. Hmm. ठीक है. Yeah. This one, this one is a bit tricky. हर एक लाइन दो बार पढ़ना. I think this question, the answer for it is held for sale. As per the last line, it mentions that it is likely that the entity will be able to sell the disposal group. So this itself says that if it's likely, it means that the government approval has received and the buyer is found and the contract has been signed. Nice, best answer. What if this line was not existed? Then your answer would have changed or not? Yeah, it would have changed. What would have your answer? Not held for sale. Because it's a very heavily regulated market Yeah. and the approval was not easily obtained. Hmm. And if it's not likely, then we cannot. Then it's not even immediate for sale as well. Immediate. Hmm. क्योंकि Hmm. अप्रूवल ही नहीं है तो हाउ कैन वी जज कि इमीडिएट है कि नहीं. और Right. इमीडिएट सेल प्रूव करने के लिए वी नीड अप्रूवल और अप्रूवल ही हेवीली रेगुलेटेड है तो इट्स नॉट सर्टेनली हाई चांस हो जाए विल गेट द अप्रूवल. करेक्ट. Yeah. ठीक है. You the definitions and conditions are quite strong from your end. Let's start the measurement criteria. The measurement criteria are same as I-36 impairment. First, what step one? If you decided कि asset is held for sale, सबसे पहली condition क्या है? Step one, non-current asset जो for example non-current asset or disposal group immediately before classification is measured at in accordance with relevant IFRS. मतलब group of assets में we have inventory, we have investment property, land and building used for operational business purpose. So it's IS 16. These are the group of assets in the disposal group. ठीक है. Hmm.
Standard is saying before classifying it on held for sale, as before classifying it as IFRS 5, record as per relevant IFRS. करेक्ट. अगर IFRS में भी हम मेजर इट ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, तो जो कैरिंग अमाउंट आएगी दैट इज द करेक्ट कैरिंग अमाउंट एज पर IFRS. बट अगर वी आर वैल्यूइंग ऑन फेयर वैल्यू रिवैल्यूएशन मॉडल, तो उस दिन से पहले वी हैव टू रिवैल्यू इट. तो जो रिवैल्यूएशन जाएगा वो एज पर रेलेवेंट उनके स्टैंडर्ड से जाएगा. फॉर एग्जाम्पल I-16 लैंड को रिवैल्यू किया तो 2000 बढ़ गया, रिवैल्यूएशन सरप्लस, हम्म इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी था, लैंड की वैल्यू बढ़ गई, विल गो द गेन विल रिकॉर्ड इन P&L. करेक्ट. हम्म जो भी क्लासिफिकेशन के पहले हम रीमेजर कर रहे हैं उसके चेंजेस विल गो एज पर देयर रेलेवेंट IFRS स्टैंडर्ड. ओके करेक्ट. नेक्स्ट, जैसे ही हमने कंप्लीट किया, वी हैव क्लासिफाइड द एसेट इज हेल्ड फॉर सेल, हम्म immediately what are we going to do? We are coming on step 2. What is step 2? On classification, measure on lower of carrying amount and fair value less cost of sale. और कैरिंग अमाउंट क्या होगी? एज पर रिलेवेंट IFRS स्टैंडर्ड जो हमने रीमेजर किया, हम्म आज की क्या वैल्यू है मार्केट में. वो दी होगी ठीक है. हम्म लोअर. और ये क्यों कर रहे हैं? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट? बेसिकली जो भी चेंजेस है ना, देख, व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू? लोअर ऑफ व्हाट? वी वांट टू रिकॉर्ड ऑन रिकवरेबल अमाउंट, क्योंकि वी आर क्लासिफाइंग द एसेट ऑन हेल्ड फॉर सेल. इसका मतलब कहीं ना कहीं द वैल्यू अब विच आर गोइंग टू, कहीं ना कहीं 100% वी आर गोइंग टू रिकवर द वैल्यू प्रिंसिपली थ्रू सेल एज पर डेफिनेशन. करेक्ट. हम्म तो अगर सेल से रिकवर करेंगे तो व्हाई आर वी राइट इन्फ्लेटिंग इट? वी हैव टू बुक द एसेट एट इट्स सेलेबल वैल्यू, रिकवरेबल अमाउंट. ठीक है. तो जो भी चेंजेस होंगे, फॉर एग्जांपल लोअर ऑफ दिस टू एंड आई गॉट लॉस ऑफ 200,000. ठीक है. ओके कैरिंग और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, सबसे पहले गुडविल पे जाएगा, एज सेम एज हाँ आई स्टैटिस्टिक. फिर नॉन करेंट असेट जो भी उस ग्रुप में थे विद इन द मेजरमेंट स्कोप ऑन प्रो रेटा बेसिस. हाउ प्रो रेटा बेसिस? बेस्ड ऑन दैट कैरिंग अमाउंट. करेक्ट. Once they या come under IFRS 15, IFRS 5, same as IAS 40 investment property, the asset is no longer depreciated. ठीक है. क्योंकि डेप्रिसिएशन लॉन्ग टर्म असेट्स पे होता है. नाउ द असेट इज नॉट नो लॉन्गर लॉन्ग, हम्म क्योंकि वो एक साल में वी आर इंटेंडिंग टू सेल इट आउट. इट्स अ करंट असेट, वी आर नॉट गोना डेप्रिशिएट इट. ओके इनिशियल मेजरमेंट पता चल गया. सबसे पहले एज पर रिलेवेंट देयर स्टैंडर्ड्स, देन हाँ लोअर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एंड कैरिंग अमाउंट. करेक्ट. लोअर ऑफ फेयर वैल्यू लेस लेस कॉस्ट टू सेल एंड फेयर वैल्यू, सॉरी, कैरिंग अमाउंट. हम्म Changes will go where? Goodwill, pro rata, assets based on their carrying amount. Now, what are we going to learn? Subsequent measurement. This was the initial measurement. Subsequently, changes in fair value. For example, we recorded on carrying amount क्योंकि वही लोअर था. ठीक है. अब वो कैरिंग अमाउंट नेक्स्ट ईयर हो गया 80 से 100 हो गया. ओके तो सो द सेम, अगर 80 से 100 हो गया तो इट्स नो लॉन्गर इम्पेयरमेंट, कुछ भी नहीं है. और इसमें इम्पेयरमेंट का टर्मिनोलॉजी भी नहीं है, लॉस हम बुक करेंगे बेसिकली. बट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज सेम एज स्टैटिस्टिक्स, ओके क्योंकि कॉन्सेप्ट इज समवॉट रिलेटेड टू दैट पार्ट, हम्म रिकवरेबल अमाउंट. ठीक है. इसमें भी सेम है. फॉर एग्जांपल 80 से एसेट की वैल्यू हो गया 100, तो हम क्या करेंगे? डेबिट व्हाट? ठीक है. राइट अगर 80 से 60 हो गया तो क्या करना है? एक्सपेंस टू असेट ओके. अब ये जो एक्सपेंस है वो चार्ज किस पे होगा? बेसिकली एक्सपेंस तो मैं 20 दिखा दिया, बट असेट
असेट अभी 20 दिखा है, और इसमें फॉर एग्जांपल आई से कि असेट में 4 असेट है इसमें, हम्म। गुडविल इज वन ऑफ दोज। पहले गुडविल में करेंगे। सबसे पहले गुडविल, फॉर हाँ। एग्जांपल गुडविल वैल्यू इज 1, तो आउट ऑफ 20 1 विल चार्ज टू गुडविल, गुडविल को नील या। करना है, हम्म। देन प्रो रेटा बेस। हम्म। हाँ, सॉल्व दिस क्वेश्चन। In this question, they have reduced your headache to record as per the relevant IFRS standard. They have given the value of that as well. And We have prior to to find classic, out fair value as cost to sale, right? not cost to sale, basically the allocation of loss. What is the amount of loss? See, yes, amount of loss and how are we going to bifurcate those? Okay. Basically, I want this. Where is step one? Yeah. Step compare step one, step two, and then I need answer as per step. Okay. I think I need help to solve this question. It's a little exactly मेरे को नहीं समझ में आ रहा तो। As per step one, हमें step three मतलब I want allocation of loss. हम्म। ठीक है, स्टेप वन क्या है कि दिस इज द एंटायर ग्रुप। ओके, गुडविल है, प्रॉपर्टी है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, इन्वेंट्री है, रिसीवेबल है, पेबल। राइट। हमें बोला हुआ है कि सबसे पहले बिफोर क्लासिफिकेशन हमको असेट की वैल्यू एज पर द रेलेवेंट आईएफआरएस स्टैंडर्ड के हिसाब से निकालना। हम्म। ठीक है, टू गेट द कैरिंग अमाउंट, देन स्टेप टू पे विल कंपेयर द कैरिंग अमाउंट विद द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल। करेक्ट, जो लॉस आया विल बुक एज पर द प्रोरेटा बेसिस, गुडविल देन प्रोरेटा बेसिस। ठीक है, राइट। गुडविल की वैल्यू एज पर रेलेवेंट आईएफआरएस स्टैंडर्ड दिया हुआ 100, सो देयर इज नो चेंज, तो कोई चेंज नहीं है। आई मीन अगर 100 से 90 होता तो 10 विल गो टू पीएनएल एज पर रेलेवेंट आईएफआरएस स्टैंडर्ड, क्योंकि गुडविल इज इंटेंजिबल, इंटेंजिबल का चेंज पीएनएल में जाता है ना। हाँ। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी 3000 का 3000 ही है एज पर रेलेवेंट स्टैंडर्ड, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 1800 का 1500 हो गया, इसका मतलब 300 का मैं पीएनएल में बुक करूंगा, चेंज इन कैरिंग अमाउंट। हम्म। ठीक है, एंट्री क्या होगी, डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट एसेट, डेबिट लॉस ऑन फेयर वैल्यू, क्रेडिट एक्सपेंस, राइट। credit the asset. Inventory is getting from 1000 to 900.
100 का लॉस, डेबिट एक्सपेंस, लॉस ऑन इन्वेंट्री, क्रेडिट इन्वेंट्री। हम्म ठीक है, एज पर स्टेप वन। अभी तो हम आईएफआरएस 5 में आए नहीं है। विल वी एंटर आईएफआरएस 5 ऑन स्टेप 2, जब हम कैरिंग वैल्यू, फेयर वैल्यू, कॉस्ट वैल्यू को कंपेयर करते हैं। हम्म ठीक है, वी हैवंट एंटर्ड, हम तो अभी रेलेवेंट आईएफआरएस की बात कर रहे हैं। ट्रेड पेएबल और ट्रेड रिसीवेबल एट पर 800 और 500 दिया हुआ ही है। ऑल्दो ये आईएफआरएस 9 का पार्ट है, बट स्टिल अगर कोई वैल्यू में चेंज है ही नहीं, तो यू डोंट हैव टू लर्न कि उसका जो चेंज आएगा वो कौन से किस में जाएगा, पीएनएल में जाएगा, फिर ओसीएम में जाएगा, कहाँ जाएगा। करेक्ट, राइट इसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो देयर इज नो कंसर्न ऑफ दैट, देयर इज नो हेडेक। राइट फेयर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 1800 का 1500 हो गया। ठीक है, 300 लॉस, लॉस ऑन फेयर वैल्यू, क्रेडिट असेट। 100 का इन्वेंट्री लॉस, क्रेडिट इन्वेंट्री। ठीक है, हम्म this is the, we enter step 1, we got the carrying amount as 5800। करेक्ट, ओके मिल गया ना कैरिंग अमाउंट, सब कुछ कंपेयर करके हाँ एज पर लिमिट आईफआरएस स्टैंडर्ड। वी या आर कंपेयरिंग विद फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल व्हिच इज 5000। 800 का लॉस आया। ओके करेक्ट, स्टैंडर्ड इज सेइंग 800 में से सबसे पहले इफ वी हैव इन अ ग्रुप गुडविल, विल ट्राई टू नील इट आउट, देन प्रो इट बेसिस। ठीक है, हम्म सबसे पहले जाएगा विल गुड ऑन गुडविल। ठीक है, 100 क्रॉस मल्टीप्लाई यू कैन डू, बट आई एम जस्ट saying you how are we going to allocate the loss. Out of 800, 100 will go on goodwill। हम्म ठीक है, बाकी सब बाकी उस पे ये 300 300 एंड 100, 400 नॉट 400। ये अब खुद की कैरिंग अमाउंट हो गई है, हम स्टेप 2 पे आए तो ये दिस नो लॉन्गर नीडेड नाउ। अब इम्पेयरमेंट कैसे कर देते हैं? कैरिंग अमाउंट, दिस इज द कैरिंग अमाउंट, हम्म दिस इज द फेयर वैल्यू, वी गॉट द 800 एज लॉस, 100 या विल गो ऑन दिस। अब बाकी सब पे कैरिंग वैल्यू पे प्रोपोर्शनेट कर दो। ओके ठीक है, हम्म हम्म और इस पे भी प्रोपोर्शनेट नहीं नहीं करना है, बिकॉज द क्वेश्चन इटसेल्फ सेइंग कि बाकी किसी में चेंज ही नहीं है। क्वेश्चन इटसेल्फ सेइंग कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन्वेंट्री पे चेंज है। इसका मतलब 700 का जो लॉस है वो इन दोनों पे बाइफरकेट होगा, बट ऑन द कैरिंग अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल कैसे एलोकेट होगा? 5800 into 300 divided by 700 700 का टोटल लॉस इनटू 1500 डिवाइड बाय व्हाट? 5800 तो 181 विल गो इन वेयर? नो, नॉट 181, 1500 नहीं। बेसिकली बेसिकली क्वेश्चन भी थोड़ा सा साइलेंट है कि बाकी सब पे चेंज है कि नहीं है, पर यहाँ पे लिखा होना चाहिए कि फेयर वैल्यू जो है सेम एज कैरिंग अमाउंट और नॉट, बिकॉज यहाँ पे जो वैल्यू है, व्हाट आर वी कंपेयरिंग? एक्चुअली वी आर कंपेयरिंग कैरिंग अमाउंट विद द फेयर वैल्यू। हम्म करेक्ट, तो कैरिंग अमाउंट हमें यहाँ से कन्वर्जन मिल गया, ये सारी कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट, कैरिंग फेयर हम्म वैल्यू ये है। इसका मतलब सब प्रो डेटा बेसिस पे जाएगा। अगर क्वेश्चन में बोला होता कि सिर्फ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, सॉरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और इन्वेंट्री इम्पेयर हो रहे हैं, आई मीन इन्वेंट्री इम्पेयरमेंट में लिखा होता ना कि करंट असेट ब्रैकेट में रिकवरेबल अमाउंट, इसका मतलब दे दोज आर ऑलरेडी ऑन दैट रिकवरेबल अमाउंट, वी डोंट हैव टू अगेन इम्पेयर दोज। इसका मतलब वो राइट इम्पेयर होकर वैल्यू आई है। क्वेश्चन इज साइलेंट, इसका मतलब वी आर अज्यूमिंग कि सब पे प्रो डेटा बेसिस पे जाएगा। तो वन, हाँ, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे भी अलोकेट होगा, देन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, देन इन्वेंट्री, देन ट्रेड रिसीवेबल, देन ट्रेड पेएबल, ऐसे करके 700 का प्रोपोर्शन जाएगा। हम्म करेक्ट, इंटू 3000 करेक्ट, तो ऐसे कर करके 700 बाइफोकेट हो जाएगा। ठीक है, या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या हुआ? सेम, डेबिट लॉस, क्रेडिट असेट। asset बट असेट का ब्रेकडाउन हमें पता चला कि अच्छा, असेट रिड्यूस हुआ है 700 800 से, बट आउट ऑफ 800 गुडविल 100 रिड्यूस हुआ है, हम्म प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 181 से रिड्यूस हुआ है, 362 सॉरी, देन 181, ऐसे कर करके बाइफर्केशन मिल गया हमें, ब्रेकअप हम्म ऑफ लॉस। या ठीक है,
या और जो यहाँ और ये ग्रुप ऑफ असेट है वो नॉन करेंट से कहाँ शो हो जाएगा? पीएनएल। नॉन करेंट से करंट करंट असेट ना। हाँ राइट, फॉर 1 ईयर के अंदर हमें हटाना है। नॉन करंट असेट, करंट असेट के अंदर असेट्स हेल्ड फॉर सेल, उसके अंदर लाइन आइटम। ठीक है। या नाउ रिक्लासिफिकेशन सेम एज इम्पेयरमेंट की, अगर इम्पेयरमेंट ना होता तो क्या होता? सेम एज इसमें भी सेम लॉजिक की, अगर हम असेट्स असेट अगर 12 महीने में सेल नहीं हुआ, हमने सोचा कि हो जाएगा बट नहीं हुआ, अनफॉर्चुनेट, अनसर्टेनिटी, तो हम्म उसका हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे? रीमेजर करेंगे, क्योंकि इट्स नो लॉन्गर क्राइटेरिया, नो लॉन्गर मीट्स द क्राइटेरिया ऑफ IFRS 5, तो हमें वापस उसको रिक्लासिफाई करना पड़ेगा। तो डे वन भी क्लासीफाई कि वो IFRS 5 में आएगा, हमने सारा ट्रीटमेंट किया, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, हमने अलोकेट कर दिया लॉसेस सब कुछ, सेम एज इम्पेयरमेंट की जैसे इम्पेयरमेंट किया। उसके बाद रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट भी हमने पढ़ा ना, दैट व्हाट इफ द वैल्यू गॉट रिकवर्ड। या करेक्ट। तो इसमें भी सेम है, व्हाट इफ द असेट इज द असेट दैट वी वांट टू सेल इट्स नो लॉन्गर सेलेबल, हम सेल नहीं कर रहे। ठीक है। तो हमें उसको रिक्लासिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो भी लॉस बुक हुआ होगा हमने कंपेयर करा होगा कैरिंग अमाउंट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, तो उसके बाद जो भी लॉस बुक किया होगा हमने अलोकेट किया होगा सब असेट्स पे। ठीक है। तो व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न? फर्स्ट, अगर रीमेजर हुआ, स्टैंडर्ड क्या कह रहा है, अगर उस सिनेरियो में अगर रिक्लासिफाई करने की नौबत आई, व्हाट द स्टैंडर्ड इज सेइंग, मेजर इफ क्लासिफिकेशन नेवर हैपन, जैसे इंपेयरमेंट में मेजर इफ द इंपेयरमेंट नेवर हैपन, सेम क्लासिफिकेशन रिक्लासिफिकेशन नेवर हैपन, क्या होता? हम क्या करते? कैरिंग अमाउंट, कौन सी कैरिंग अमाउंट, कौन सी कैरिंग अमाउंट? अगर कोई चेंजेस है ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल हम असेट को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे यूज कर रहे थे, सेम डेप्रिशिएट हो के क्या वैल्यू आती, कैरिंग अमाउंट क्या रहती? फॉर एग्जाम्पल रिवैल्यूएशन, हमने रिवैल्यू किया, तो कैरिंग अमाउंट क्या आती विदाउट एनी रिक्लासिफिकेशन? राइट। अंडरस्टूड। तो क्या वैल्यू या रहती विद इट्स रिकवरेबल अमाउंट? रिकवरेबल अमाउंट कौन सी डेट की, कौन सी, यू हैव टू रिमेंबर द डेट। हाँ, ये डेट, ये कैरिंग अमाउंट कौन सी कैरिंग अमाउंट है? फ्रॉम द डेट, इट्स नो, नॉट फ्रॉम द डेट, ऐसा है, इट्स नेवर हैपन रिक्लासिफिकेशन, इसका मतलब जब से वी आर यूजिंग द असेट तब तक टिल डेट की कैरिंग अमाउंट। हम्म करेक्ट। रिकवरेबल अमाउंट क्या है? द डे द क्राइटेरिया इज नो लॉन्गर मेट, इसका मतलब वी आर गोइंग टू रिक्लासिफाई इट, तो उस दिन की रिकवरेबल वैल्यू क्या है? ओके। करेक्ट। लोअर ऑफ दिस टू, जो भी चेंज आएगा विल गो इन PNL। गेन हुआ, एनी एडजस्टमेंट पास करनी पड़ रही है, विल विल एडजस्ट इन PNL। गेन हुआ PNL, लॉस हुआ PNL। कैसे लॉस हो सकता है? असेट की वैल्यू थी आफ्टर सब रिक्लासिफिकेशन, सब कुछ रिकवरेबल अमाउंट भी बुक 100, बट जब रीमेजर कर रहे हैं तब 90 पे कर रहे हैं, क्योंकि तब इसका मतलब 90 पे क्या हो रहा है, कैरिंग अमाउंट, हमने क्या किया, कैरिंग अमाउंट कंपेयर किया लोअर, कैरिंग अमाउंट लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट एंड रिकवरेबल वैल्यू। Well, हम्म बट यहाँ पे भी क्या कंपेयर किया हमने, कैरिंग अमाउंट एंड रिकवरेबल अमाउंट, बट यहाँ पे अलग था, रिकवरेबल अमाउंट कौन सी थी, फेवरेज कॉस्ट टू सेल, वो तो सेम ही है। ठीक है। मतलब रिकवरेबल अमाउंट क्या है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, हम्म आइदर वैल्यू इन यूज, अगर हम यूज करके उसकी निकालते तो। राइट। पर जब 100 के सिनेरियो था तब हमारी कैरिंग अमाउंट क्या थी, एज पर देयर रिलेवेंट IFRS स्टैंडर्ड, कि वो हमारी कैरिंग अमाउंट बन गई। हाँ। करेक्ट। कैरिंग अमाउंट 90 के टाइम पे क्या है, सेम कैरिंग अमाउंट आती जा रही है, वी आर डेप्रिशिएट, क्योंकि इट्स नॉट, ये हम सिचुएशन कंसीडर करने की, अगर हम क्लासिफाई करते ही ना तो क्या सिचुएशन, तो हमने को हम कुछ उसको रीमेजर नहीं करते एज पर देयर रिलेवेंट IFRS स्टैंडर्ड, जो डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड जो भी हम यूज कर रहे आते थे वही करता, we would have their respective carrying amount of individual assets। करेक्ट। हम्म सिचुएशन नहीं होती।
कंपेयर विद द रिकवरेबल ऑफ व्हाट द डे asset is no longer meeting the criteria of IFRS 5. Okay. कौन से कौन से टाइम का कैरिंग ऑन वी आर यूजिंग, मेक श्योर यू रिमेंबर दैट पार्ट। Right. ठीक है। तो इसमें तो 10 का चेंज आया, 100 से 90 हो गया, तो 10 का चेंज में गो इन पीएन। ठीक है। सब कुछ सेम है लॉजिक, सेम एज ग्रांट। ग्रांट में भी क्या है, अगर हमको रीपे करना आ गया, इसका मतलब वी हैव टू बुक लॉस, क्योंकि Hmm. जो पहले बुक किया प्रॉफिट हमको लॉस बुक करना पड़ेगा। सेम इम्पेयरमेंट, हमने जो लॉस बुक किया हुआ था वो जितना ही रिवर्स हो पाएगा उतना ही हो पाएगा, गुडविल का नहीं हो पाएगा, उसमें एक्सेप्शन था। करेक्ट। इसमें भी Right. वही है कि अगर रिक्लासिफिकेशन के टाइम पे कुछ लॉस हुआ, विल हैव टू एडजस्ट इन पीएन। ठीक है, तो सबका रिवर्सल है, स्टैंडर्ड है तो उसका रिवर्सल भी है। फॉर एग्जाम्पल IAS 16 में वी लर्न की परचेस कैसे हो रहा है, तो वी ऑल्सो लर्न की डिस्पोजल भी कैसे हो रहा है। Hmm. ग्रांट में ग्रांट मिल भी रही है तो रीपे का एडजस्टमेंट कैसे करना है वो भी हमें पता है। इम्पेयरमेंट बुक कर रहे हैं तो रिवर्सल का भी वी हैव टू लर्न। अगर IFRS 5 के क्राइटेरिया मेट हो रहे हैं तब क्या अकाउंटिंग थी, क्राइटेरिया मेट नहीं हो रहा है रिक्लासिफिकेशन, उसका भी पढ़ना है। ठीक है। Right. Yeah. अब यहाँ पे लिखा है अनलेस asset was measured at revalued amount, तो कुछ कुछ लॉजिक बन रहा है कुछ। इसका मतलब रिवैल्यूड अमाउंट पे बुक किया होता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं रिवैल्यूएशन गेन होता है उसके बुक्स में। तो 10 का अगर मेरा रिवैल्यूएशन 10 का लॉस आ रहा है और मेरे बुक्स में रिवैल्यूएशन सरप्लस में अगर 20 का पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले मैं उससे एडजस्ट करूंगा। माइनस करो, हाँ। करेक्ट। राइट। तो क्या कह रहा है, वही कह रहा है कि अगर ऐसे तो नॉर्मली पीएनएल में एडजस्टमेंट होगा, बट अनलेस अगर पहले से कुछ रिवैल्यूएशन रिजर्व पड़ा हो तो हम हम्म। उससे एडजस्ट करेंगे। हम्म। हमारे केस में तो रिवैल्यूएशन सरप्लस मोर देन आर लॉस, तो पूरा का पूरा रिवैल्यूएशन में चला गया। फॉर एग्जांपल रिवैल्यूएशन सरप्लस 20 है, हमारा लॉस 50 है, 20 and 30 विल गो इन पीएनएल। ठीक है। राइट। इसका नोट्स टू अकाउंट है नॉर्मल डिस्क्लोजर का नॉलेज है थोड़ा सा। डिस्क्लोजर में हम क्या शो करेंगे, कौन से असेट हमने क्लासिफाई किए हेल्प फॉर सेल, हम्म। कौन से ग्रुप में लायबिलिटीज है। लायबिलिटीज को नेट ऑफ नहीं करेंगे, हम अलग अलग दिखाएंगे। राइट। नॉन करंट लायबिलिटी में आ जाएगी, नॉन करंट असेट में आ जाएगा। ठीक है। कंपेरेटिव्स हम नहीं प्रेजेंट करेंगे, सेम ईयर का एडजस्टमेंट होगा जो भी होगा। सब गेन और लॉस भी हम दिखाएंगे कितना क्या है, सबका ब्रेकअप। और मेजर क्लास ऑफ असेट, फॉर एग्जांपल ग्रुप में IAS 16 के मेजर असेट्स थे, IAS 16 के स्टैंडर्ड के। वी हैव टू डिस्क्लोज सेपरेटली कि सबसे मेजर स्टैंडर्ड कौन सा था। मेजर क्लास ऑफ असेट एंड लायबिलिटी टू बी डिस्क्लोज सेपरेटली इधर इन एसओएफपी और नोट्स, या तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट में शो करो, नोट्स टू अकाउंट, या तो आई मीन बैलेंस शीट में शो करो, या तो नोट्स टू अकाउंट और मेजर क्लास ऑफ असेट्स। ठीक है। बेसिकली ये सब हम क्यों कर रहे हैं, ताकि यूजर्स को थोड़ा बेटर नॉलेज मिले कि हमने क्या किया है एक्चुअली। करेक्ट। अगर यूजर यूजर बुक्स देखेगा मेरी कि भाई मैं ही आज की देख, मेरे को बैलेंस शीट देखता हूँ, किसी के नोट्स टू अकाउंट देखूंगा, तो अगर उन्होंने नेट करके दिखा होगा तो मेरे को पता नहीं लगेगा कि अच्छा इसके असेट के एसोसिएट लायबिलिटी इतनी भी थी। करेक्ट, मेरे को पता नहीं लगता क्योंकि नेट 20 शो हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल 80 और 100 का असेट था, 80 की लायबिलिटी थी, एसोसिएट डायरेक्टली एसोसिएट लायबिलिटी ऑफ दैट असेट। तो मैं बुक्स में हम्म। मेरे नोट्स टू अकाउंट में 20 दिखा था, अगर मैं नेट नेट शो कर रहा हूँ तो मेरे को लगता है हम्म। अच्छा 20 का असेट हम हेल्प फॉर सेल है। मैं ये समझता हूँ, मेरे को ये पता नहीं लगता कि असेट तो एक्चुअल में 100 का है, लायबिलिटी 80 की है। तो इसलिए मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं करना, मिस अंडरस्टैंडिंग नहीं क्रिएट करनी, इसलिए हम नेट नहीं शो करेंगे। और हम राइट। क्यों शो कर रहे हैं मेजर असेट, थोड़ा सा डिटेल दिखा रहे हैं कि अच्छा इस ग्रुप में इतने असेट थे, 6 असेट थे, इसमें से 4 IAS 16 के, 2 IAS 40 के हैं। तो इस वे में थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करेंगे। अगर गुडविल है तो अच्छा ये IAS 38 है या IAS 16 है, तो थोड़ा ब्रेकअप दिखाएंगे कि ये स्टैंडर्ड्स के भी असेट्स हैं।
एक तो कौन से लिस्ट ऑफ आइटम्स हैं, कि वो लिस्ट ऑफ आइटम्स कौन से असेट रिलेवेंट स्टैंडर्ड में शो करते हैं, वो भी हम शो करेंगे। ओनली द हम्म। पर्पस इज टू शो फेयर प्रेजेंटेशन, इंक्रीज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूजर, नॉट क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग। करेक्ट। Right. Yep. नाउ पार्ट टू ऑफ दिस चैप्टर, व्हाट इज पार्ट टू? Uh, Discontinued operations. डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। कोई डिपार्टमेंट ही डिसकंटिन्यू कर रहा है। What is discontinued operation? Discontinued operation is a component of an entity, department of an entity, subsidiary of an entity, कोई entity की subsidiary है वो parent company, उसके ऑपरेशन Hmm. कैश फ्लोज जो डिस्टिंग्विशेबल है, अपने खुद के जनरेट करती है, इज इंडिपेंडेंट सब्सिडियरी और डिपार्टमेंट की खुद के इंडिपेंडेंट कैश फ्लो जनरेट करता है, खुद का इंडिपेंडेंट लायबिलिटीज पे करता है। करेक्ट। एंड इट्स कंट्रीब्यूटिंग इनकम टू द अल्टीमेट पेरेंट कंपनी। ठीक है, दिस इज द ऑपरेशन। डिपार्टमेंट का मतलब यही होता है, न्यू Right. एंटिटी। अगर हम इसको कब डिस्पोजल मानेंगे, अभी हाउ आर वी गोइंग टू क्लासिफाई कि ये डिस्पोज्ड ऑफ है और हम हेल्ड फॉर सेल में दिखाएंगे? अगर अगर वो डिपार्टमेंट एक मेजर लाइन ऑफ द बिजनेस है, क्लियरली दिख रहा है, बिजनेस पूरा अलग है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एप्पल एप्पल है, Hmm. एप्पल मोबाइल टेक्नोलॉजी सब बना रही है, फॉर एग्जांपल मोबाइल्स है, मैकबुक है, आईपैड है। नाउ एप्पल ऑल्सो लॉन्चेस इट न्यू डिपार्टमेंट ऑफ ट्रैवल कंपनी, ट्रैवल एजेंसी। ठीक है, Okay. कंप्लीटली दिख रहा है, नया बिजनेस लाइन है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में Hmm. कोई नो लॉन्गर ट्रेडिंग। नाउ एप्पल इज कमिंग टू न्यू इंडस्ट्री इन ट्रैवल इंडस्ट्री। ठीक है, टूरिज्म इंडस्ट्री। तो इट्स ए कम्प्लीटली डिफरेंट बिजनेस लाइन। करेक्ट। Right. और जोग्राफिकल लोकेशन, या तो किसी और जोग्राफिकल लोकेशन पे ही चेंज कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली हम मोटो क्या है इसको, कि हमें दिखाना है कि ये सेपरेट बिजनेस लाइन है, सेपरेट Okay. है है एक ही चीज, बट Hmm. कंडीशन इस तरीके से लिस्ट आउट किए गए कि वी कैन डिटरमाइन कि ये सेपरेट बिजनेस एंटिटी है कि नहीं, ये खुद का ही है। फॉर एग्जांपल अगर स्पीकर्स भी लॉन्च, एप्पल ने अपने हेडफोन तो है ही, स्पीकर्स भी लॉन्च कर दिया, सो इट वोंट कंसिडर एज अ डिफरेंट बिजनेस लाइन। Because it's same as electronics. या सेम एज इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि एप्पल इज हाँ. ऑलरेडी ट्रेडिंग इन एयरपोर्ट्स, खुद के Exactly. एयरपोर्ट्स है, उसके खुद के हेडफोन्स पे, तो स्पीकर नया लॉन्च कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए। इट्स इट्स Hmm. नथिंग न्यू बिजनेस लाइन। पर इंडस्ट्री Right. चेंज कर दी तो इट कैन कंसिडर कि हाँ, एप्पल की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री अलग है, बिजनेस लाइन अलग है, ट्रैवल टूरिज्म इंडस्ट्री अलग है। ठीक है। Hmm. दूसरा कंडीशन, अगर एप्पल ने नया डिपार्टमेंट निकाला है, क्यों निकाला है? टूरिज्म, एक तो एप्पल के नाम से, और मोटो ही क्या है कि मैं इस टूरिज्म को थोड़ा सा बड़ा करके बेच दूंगा, पार्ट ऑफ सिंगल प्लान टू डिस्पोज ऑफ अ सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस। टूरिज्म एक, बेसिकली क्या क्या माइंडसेट बन रहा है, ऐसा क्यों करेंगे? एक तो एप्पल वैसे ही बड़ा है, इट्स अ बिग बिजनेस, इट्स अ गुडविल। अगर वो टूरिज्म इंडस्ट्री में घुसता भी है ना, पीपल विल हैव अ गुड अमाउंट ऑफ ट्रस्ट। फॉर एग्जांपल रिलायंस, द रिलायंस जब टेलीकम्युनिकेशन में आया, वोडाफोन और एयरटेल Hmm. ऑलरेडी वहीं पे ही थे, बट बिकॉज Hmm. रिलायंस हैज बिल्ड a good amount of credibility in a market reputation, he had a goodwill, जैसे वो टेलीकम्युनिकेशन में आया तो उसके लिए वो सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस था। Hmm. करेक्ट। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उसको कुछ अलग कुछ हुआ, बेसिकली लोग क्यों एक्सटेंड करेंगे? या तो अर्न करने के लिए, या तो कि भाई मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके सेल इट आउट, क्योंकि मेरा ब्रांड नेम लगेगा, एप्पल का टूरिज्म इंडस्ट्री है, तो कहीं ना कहीं अच्छा ही होगा, तो मैं इसको बेचूंगा, आई अर्न मोर मनी, क्योंकि जितने में मैंने इसका एस्टेब्लिशमेंट किया होगा उससे ज्यादा ही मेरे को मिलेगा, बिकॉज भले वो बिजनेस लाइन अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, बट बिकॉज माई ब्रांड इमेज इज अटैच विद द इंडस्ट्री, इसकी वजह से वो बिकेगा। करेक्ट। Right. तो अगर ये ऐसा कुछ प्लान है कि इसको बस सेटअप करके बेचना है, सो है इंटेंशन आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं हेल्प फॉर सेल पे ही जाएगा, वो हमारे मतलब इसमें नहीं दिखेगा, बैलेंस बैलेंस में थोड़ा सा अलग ही दिखाना पड़ेगा।
Okay. हेल्प फॉर सेल। मेक सेंस ना, Hmm. लॉजिक, यू आर गेटिंग द लॉजिक राइट, क्या हो Yeah, रहा yeah. है। थर्ड कंडीशन, अगर एक तो डिपार्टमेंट खुद का अलग कर दिया, फॉर डिपार्टमेंट ही अलग बना दिया, अगर कोई एंटिटी नहीं परचेस कर रहा है, फॉर एग्जांपल एप्पल इज परचेजिंग टेली कम्युनिकेशन, एप्पल ने नया, फॉर एग्जांपल एप्पल इज परचेजिंग जियो विद अ मोटो टू सेल इट आउट टू अदर पार्टी। एक तो रिलायंस का था, रिलायंस ने अपने, रिलायंस ने बेचा होगा, एप्पल का भी नाम जुड़ गया, पीपल विल हैव अ गुड ट्रस्ट, Hmm. टू बिग बुल्स आर इनटू दिस इंडस्ट्रीज ना, भले अभी एप्पल इज ओनिंग दी 100%, बट उसको पता तो होगा ना, इंडिविजुअल्स और पीपल्स को मार्केट में, कि ये Right. पहले पार्ट रिलायंस का था, नाउ एप्पल का पार्ट है, Hmm. और एप्पल का मोटो ये है कि मैं इसको बेच दूंगा बाद में, तो इट्स हेल्प फॉर सेल। Okay. ठीक है, Yeah. असेट में भी वही था, मोटो इज टू सेल, थोड़ा हाँ. सा एडवांस वर्जन हो गया, अब हम कंपनीज परचेस कर रहे हैं, डिपार्टमेंट एक्सटेंड कर रहे हैं विद मोटो टू सेल। ठीक है, तो इसकी अकाउंटिंग क्या होगी, हम इसको बुक्स में शो नहीं करेंगे, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, हम इसको ऐसे शो करेंगे डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, हम बैलेंस शीट में तो शो होगा हेल्प फॉर सेल में, बट पीएनएल में कैसे दिखाएंगे इसको। फॉर एग्जांपल मेरा टोटल सेल इज 100, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एप्पल ओनली, कंटिन्यू विद एप्पल एग्जांपल, इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस से मेरा 100 का सेल आ रहा है। ठीक है, 20 इज आउट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, सो लेट्स टेक टूरिज्म इंडस्ट्री, 20 मेरा टूरिज्म इंडस्ट्री से सेल आ रहा है, कंसोलिडेशन में लॉजिक ये बनता है कि 120 शो होगा, हाँ. बट जब एक्सपांड किया था बिजनेस, तभी मोटो था कि वी आर गोइंग टू सेल इट आउट, तो हम उसको 100 ही दिखाएंगे, हम उसको 20 नहीं दिखाएंगे पीएनएल में, एक सिंपल लाइन आइटम क्रिएट कर देंगे। फॉर एग्जांपल पीएनएल कैसा होगा, रेवेन्यू, सीओएस, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, फाइनेंस एक्सपेंस, देन प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स, पीएटी, पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, Hmm. तो ये सब होगा एक्सक्लूडिंग द हेल्प फॉर सेल एंटिटी, सब कुछ। ठीक है, हम उसको शो नहीं करेंगे हम, क्योंकि लॉजिक यही स्टैंडर्ड कह रहा है कि द मोटो इज टू सेल ना, तो इट्स बेटर कि ठीक है, यू यू अर्न 20 इनकम इन द करंट ईयर, तो एज पर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कि हमें तो शो करना है कि हम बुक्स में शो करेंगे कि वी अर्न इनकम, बट प्रेजेंटेशन अलग हो गया। कैसे प्रेजेंटेशन, हम जो नॉर्मल पीएनएल होगा उसमें जो कंटिन्यूड ऑपरेशन है, जो Hmm. एक्चुअल ऑपरेशन है, जो हम फ्यूचर में कंटिन्यू करेंगे, इट्स नॉट हेल्प फॉर सेल, वो हम यहाँ पे शो करेंगे, एनीथिंग एक्स एक्स अमाउंट जो भी आ रहा है। ठीक है, हमारे एग्जाम्पल में 100 था, 100 फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक आइटम, नाउ विल क्रिएट अ सेपरेट लाइन आइटम, सेम इन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कि इनकम ऑब्लिक लॉस ऑन डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या शो करेंगे, सेपरेटली सब कुछ नेट करके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नेट आ रहा है 10। ठीक है, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में क्या होगा, सेम ही चीज है, बट नेट यहाँ पे डायरेक्टली हो जाएगा कि अच्छा 20 का इनकम बन गया, 5 का नेटवर्क, और ब्रेकअप कहाँ शो Okay. होगा, नोट्स टू अकाउंट, कि भाई 20 वॉज द रेवेन्यू ऑफ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, उसमें इतना कॉस्ट ऑफ सेल्स था, इतना ये था वो था, सब कुछ था। Hmm. ये पीएल में क्या शो होगा, Income. प्रॉफिट आफ्टर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, डीओ। ठीक है, तो 5 + 10, तो दिस इज योर टोटल प्रॉफिट फॉर द ईयर, ऐसे शो होगा। तो Right. हमने दोनों चीज सेटिस्फाई कर ली, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट भी कर लिया कि वॉट एवर वी आर इनकरिंग इनकम एंड लॉसेज वी आर शोइंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट सेटिस्फाई कर लिया, Hmm. हमने आईएफआरएस 5 भी लगा दिया, प्रेजेंटेशन ऊपर नीचे करके, सेटिस्फाई बोथ दिस कॉन्सेप्ट। Yeah. ठीक है,
तो इससे ये चीज पता लग रही है, दो चीज, एक चीज अगर मैं यहाँ पे शो कर देता 120, तो यूजर्स के लिए थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता कि अच्छा पूरा 120 है तो इसमें से ब्रेकअप जानना है, वुड बी मोर टफ। बट अगर मैं शो करूँ 100 और 20, ठीक है, तो क्लियरली दिख रहा है ना कि अच्छा कंटिन्यूड ऑपरेशन से 100 आ रहा है, डिसकंटिन्यूड से 5 आ रहा है। या ठीक है, डन। लेट्स रीड द थियरी। Single amount on the face of comparison of profit post tax profit loss of discontinued operation, फिर पोस्ट टैक्स गेन, अगर कुछ रिवैल्यूएशन गेन भी हुआ होगा तो गेन भी आएगा। करेक्ट, रिवैल्यूएशन हम्म। गेन भी आएगा। बस कंडीशन ये, क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया मस्ट बी मेट बिफोर बिफोर। ठीक है। या प्रेजेंटेशन टू, एनालिसिस ऑफ सिंगल अमाउंट इन नोट्स टू अकाउंट। सिंगल अमाउंट तो 5 दिख गया हमें, उसका ब्रेकअप क्या है, एक्सपेंस लॉस हम सेपरेटली शो करेंगे नोट्स टू अकाउंट। रेवेन्यू, एक्सपेंस, प्री टैक्स प्रॉफिट, पोस्ट टैक्स प्रॉफिट, एनी गेन, रिवैल्यूएशन गेन, डिस्पोजल गेन, कुछ भी हुआ है, ठीक है, रिलेटेड टू दैट डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन विल शो सेपरेटली। ठीक है, राइट। यू गेटिंग राइट। या Let's solve the quiz. We are done with the chapter. Continue. Go ahead. यस। Four quiz. Yeah. The first quiz answer is third option. Third option. Correct. And you know the logic of why we are not netting it off. Yeah. Correct. Push quiz two.
fourth. It can be more than one. Fourth one is right. Okay, more than one. Then it should be first and fourth. Correct. Third. Second and third. Perfect. Fourth. Just wondering what where if the in quiz three, the fourth statement says that the gain and loss of remeasurement go in OCI. If you are seeing it fall, then where should the change go in? P&L. Okay. Fourth. I don't know answer of this. If non-current assets, we have one exception in IFRS 5 for asset and for discontinued operation. If we are reclassifying, okay, we are Hmm. classified the asset as held for sale. Hmm. इसका मतलब we will be doing, we won't be restating prior period changes क्योंकि prior period में we would have recorded in non current asset, current period में we are saying we are going to sell it out, तो वो current asset में आ जाएगा. ठीक हाँ. है. So if assets are held for sale, then we won't reclassify, we won't do any changes in prior period. But if discontinued operations uh, entity has discontinued operation in the current period, इसका मतलब Mm-hmm. we will restate the prior period balance as well. How? Why are retain earning? I told you prior period errors, restate Yeah, got it. retrospective effect. Mm-hmm. ठीक है. So the answer will be 2 and 3. Okay, got it. ठीक है. The first one says that non-current asset held for sale are we are uh, the same prior period amounts are also reclassified. It's no, it's not prior period. We are only going to do prospective effect. For the fourth one, what is they are saying? Uh, Discontinued may we are yeah, we are not reclassifying, but we have to reclassify basically the prior period amount. Right. ठीक है. Yeah. Okay. So we are done with IFRS 5. Let's take a lunch break of 30 minutes. We'll meet at 1:40. Okay. And we'll Okay. start IS 21 foreign files. Yeah. Okay. Yeah. Bye.
Hello. Hello. Yeah. Okay. So let's start with our last topic of today, IS 21 foreign currency. What do you think? What are we going to learn in this chapter? The same question I ask in every topic before starting every topic. How do we deal with foreign currency, maybe while sailing or interacting with each other, like transactions and all? Correct, correct. Yeah, that's what are we going to learn, and how at what rate we are going to record, because uh, there's two currency involved in this. So that's what the guide and standard gives us. So standard says there are two currencies: functional currency and foreign currency. And what is functional? Home currency, Hmm. the main currency in which the entity operates, the Yeah. actual establishment of the entity. Currency of the primary economic environment in which the entity operates. Understood? Currency of primary economic activity environment the entity has established or which operates in a particular geographical location. It's dealing in that country for a long period of time. Hmm. So that is known as functional currency. Right. Foreign currency other than functional currency, straightforward. The currency which is not a functional currency, it's a foreign currency. And presentation currency, the rate at which the presentation currency, the currency in which financial statements are translated. For example, the functional currency is dollar. We are going to present our financials in dollar terms, in rupee terms. Okay? What are foreign operations now? Subsidiaries, Apple Geo acquisition, associate investment below 50%, between 20%, joint venture, branch, any branch that we have opened in different currencies, countries, whose activities are conducted in a country or currency other than those of a reporting entity. For example, I established one of my branch in United Arab Emirates, for example, Dubai. So there, the transaction would be in dirhams. Okay? Transaction, my liabilities, if I've taken any business loan, then that would be in dirham. So the financials of that particular branch is going to be other than my functional currency. Okay. At what rate? Because when I'll be showing my entire full picture at the year end, I have to combine all my different branches of different which I've established different countries. They have their own currencies in which they have operated for the entire year. So at what rate are we going to account? How are we going to account any changes of rate up and down? Where are we going to show in our books of account? That's what we are going to learn in this chapter. Okay. Right. So we have standard has given few indicators where from which through which we can determine a functional currency. Our standard says very straightforward. Straightforward thing standard is saying at in what currency we are establishing our selling price, putting our selling price on a product. Um, which country's economic forces, pestle model, portal model. You understand pestle portal? Yeah. Social, economical, political activities which impact our companies. So which countries' political, social, economical activities affect our selling price? For example, I
let's take an example of Wipro. Hmm. Wipro has been established in India. Hmm. Okay, its selling price is in Indian term, Indian rupee. Right. So, and if I say that political decisions, social decisions, economical impact, uh, recession impact of India is going to impact the selling price of Wipro, that means that says that rupee is the functional currency of Wipro. Why? Because in Indian currency is rupee, and Hmm. and our selling price is that we have set put at the selling price in rupee. Then Indian countries economic pestle activities affecting our selling price at in which currency we are paying our labor material cost. For example, we are dealing with Indian vendors only, and we have employees from India only. We are going to pay those in rupee, correct? So these are Yeah. the primary factors which help us determine which currency is a functional currency. Okay. Standard also, if we cannot determine functional currency through primary indicators, we have secondary as well. What are secondaries? Currency is in which funds from financing are generated. Currency in which we have taken loan. For example, we have taken from SBI. The SBI won't give loan in dollars. They will give loans in rupee. So Hmm. we are taking finance in rupee. So that also gives us an indication that yeah, our functional currency is rupee. Then the second one is currency in which operating cash receipts are usually retained. Can you explain this? I mean, if you any idea you're getting from the statement? Cash receipts usually retained. Um, Not really. See, what are cash receipts? Somebody is giving us receipts. Operating. It says operating. Operating means we have given, we have sold the product. Now the customer is paying us in rupee. So it Right. says now that a function currency in rupees. Customer won't pay in dollar. No? Yeah. Right. Functional currency. And if we cannot determine through primary indicators, through secondary, standard gives us additional indicators. Standard is very generous. Hmm. First, are activities conducted as extension of reporting entity with a significant autonomy? For example, I've established one of my company in same UAE. So, is that company have significant autonomy, independence on their own? Is he dependent on me? I mean, the parent company to pay his loans, liabilities, help them in financing, operating. क्या वो कंपनी इतनी कैपेबल है? Independent, autonomy. What proportion of transaction with the reporting entity? Reporting entity means the parent company. Hmm. ठीक है, कितने proportion, I mean किस तरह के ट्रांजैक्शन एंटिटी के रिपोर्टिंग एंटिटी के साथ हो रहा है? यूजुअल हो रहा है तो दैट इज फाइन, बट अगर बड़े बड़े हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल द एंटिटी इज डिपेंडेंट अपॉन मी ऑन प्रोडक्ट्स, तो कहीं ना कहीं बड़े बड़े डीलिंग्स होंगे विद मी हु आई Yeah. एम सिटिंग इन इंडिया। Hmm. तो कहीं ना कहीं ये शो हो रहा है कि उसके पास ऑटोनॉमी नहीं है। अगर ऑटोनॉमी नहीं है तो फंक्शनल करेंसी इज रुपी, अगर ऑटोनॉमी है तो उसकी फंक्शनल करेंसी इज दिराम। क्या बेसिकली व्हाट वी आर सेइंग, ऑटोनॉमी मींस सिग्निफिकेंट इंडिपेंडेंट। Is he independent enough to Okay. bear all his costs, materials, operating operating on their own, paying off all the liability, maintaining a good liquidity ratio, maintaining good reputation, everything? अगर है तो उसकी functional currency will be dirham, mine will be different in Right. individual financial statement. ठीक है? Third point, does it generate sufficient cash flows to service existing normally expected debt obligation?
करेक्ट? क्या वो इतनी कैपेबल है टू पे इट ओन दैट ऑब्लिगेशन? क्या इतना कैश फ्लो वो जनरेट कर पा रही है ऑन इज ओन? हम्म। फोर्थ, डू कैश फ्लोज डायरेक्टली अफेक्ट रिपोर्टिंग एंटिटी? आई मीन, क्या मैं उस पर डिपेंडेंट हूँ? क्या उससे कैश फ्लो के लिए मैं डिपेंडेंट हूँ? क्योंकि द मोर कैश फ्लो इट विल जनरेट, आई विल बी बेनिफिटेड, राइट? तो इज डज cash flow is impacting the reporting entity, which is me sitting in India? If no, then we both are independent, right? ठीक है. Right. Let's do one question. All this individually, for individual point, just uh, give me which one is the functional currency along with the reason. ठीक है. Okay. Yeah. So The functional currency of this entity is INR only because, as per the question mentioned, that it only earns revenue in USD, which is also 60 to 70%. But the other expenses and income, like borrowings, equity capital, all are done in INR. okay. So I think INR is the functional currency of this entity. Yes, correct. Is my reasoning right? Yes, yes. It clearly states, na. Yeah. Please. Hello. Yeah. Yeah. Uh, so yeah, the functional currency is INR. Why? The first says that it's an Indian listed company, operation across India in other countries. PQR earn revenue in currency other than INR. Revenue is in different currencies. 60 to 70% is in USD. Then then remaining portion either it could be Euro, Japanese yen, GBP, global pound, British pound. Then says that majority of the cost is in INR.
shows which says 40 to 45, then 30 to 40 is in USD, then says majority of the borrowing is INR. Then once the receipts are been given, they are converted into INR. So majority of the indicators are saying that, except the revenue part, saying that revenue INR currency is the more dominated for PQR. Correct? We Yeah. can say that, yeah, functional currency is INR for PQR. Yes. So the day on which the transaction has incurred, at what rate are we going to restate it? Okay. So the day on which the transaction has incurred, we will going to restate it at the transaction date. For example, the day on today's 20th June, we incur a transaction and the current dollar rate is 80 rupees, 80 rupees. Okay. So this is a transaction date. For example, I have made a sale $10,000. Okay. Current dollar rate is 80 rupee is equal to $1. Dollar Hmm. is 10,000. So what will be my INR? This will be my sales. Okay. Or appropriate average rate अगर क्वेश्चन में दिया होगा. For example, on the same day, I've incurred 10 transactions. ठीक है. और हर एक सेकंड में कुछ कुछ पॉइंट का डिफरेंट आ रहा है. तो विल टेक आउट एवरेज रेट. ठीक है. अभी तो एक ही ट्रांजैक्शन आई टोल्ड यू कि वी इनकर्ड, बट व्हाट इफ वी इनकर्ड मल्टीपल ट्रांजैक्शन इन द सेम डे. ठीक है. Yeah. In morning only I explain you the difference between monetary and non-monetary assets. What are monetary and non-monetary assets? Monetary assets in which the cash that is incurred is are considered as an expense or maybe income. In non-monetary expenses, it's not considered like the asset that we depreciate. So the depreciation is non-monetary. Basically, if anything we are dealing in cash on a regular basis, that will come on a monetary. Monetary means the money is getting exchanged. Non-monetary means there is no exchange of money. Right. This is the example. Financial asset, cash, bank balance, receivables, payables, preference shares, maybe consider the monetary in debt, cash, provision, pension, other employee benefit paid in cash, salaries. Non-monetary item means goodwill is not monetary, intangible asset, PPE assets, inventory, equity investments. Why equity investments are non-monetary? Because equity is something which is long term. So once the investment is made, there is no exchange of money in between. Capital advances, for example, we have received advance of particular contract that we haven't started performing on. So it's an advance liability for us. We just received the advance. There is no exchange of money. You understand? Yeah, money आ गया, but there is no continuous exchange. Right. Employee benefit salaries are being paid regularly. There is always up and down cash and bank balance. Receivables also goes up and down. Understood? We are receiving cash. Uh, we are meeting sales on credit. Receivable goes up. So that's why receivable payables are monetary items. Hmm.
At what rate we uh, record at the initial date? At what rate we record transaction on initial date? You have to remember all this, okay? Made you understood, na? Which one? Rate at transaction date. Initial transaction to functional currency. Hmm. Initial translation to functional currency. Rate at transaction date. Yeah. At the reporting date. Monetary item means cash, receivable, bank balance, credit payable. Will be Hmm. translated as a reporting date. Hmm. Reporting date पे क्या rate? Non-monetary item at historical cost. I told you in morning. What are give me the example of non-monetary item recorded at historical cost. Asset. Yeah, but which asset? I think all kind. Historical cost. PP, investment property at which we have recorded on cost. Those non-monetary items. And non-monetary item at fair value means in their respective standards we have recorded at fair value. Land, we have purchased 1.2 million. So, sorry, 12,000 dinars. So Hmm. remember, Yeah. morning question. Yeah. Yeah. So that was non-monetary of at what? Non-monetary at Fair value. why fair value? Historical cost, na? Fair value, how fair value? उस क्वेश्चन में बोला था क्या कहीं पे कि we are recording at fair value. You know, right? Yeah, there was no hint, so that's why it's historical. Right. So monetary items at reporting date, but non-monetary we have two, historical and revaluation. अगर historical है तो the rate at which transaction date, the rate at which we have purchased उसी पे record होते होते आएगा. Hmm. But non-monetary fair value means जब भी fair value पे convert करेंगे, whenever we are going to determine the fair value, we are going to use the rate at uh, on fair value date, valuation date basically, the date on which we have revalued our asset. Okay. मेक सेंस ना, जब रिवैल्यू कर रहे हैं उसी का रेट लो, जब अगर हिस्टोरिकल पे मेजर कर रहे हैं तो यूज द ओल्डर रेट, द रेट Right. एट विच वी हैव परचेज. Yeah. सारा रेट, सारा गेम रेट का है. वंस यू अंडरस्टूड द रेट, बस सिंपली जो भी ट्रांजैक्शन प्राइस लिखा होगा 12,000 है फॉर एग्जांपल, 20,000 है, और ये डॉलर्स में कन्वर्जन है, 80 = 1 है, तो सिंपली कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करो, क्योंकि मेरे को आईएनआर में चाहिए कितना है, करेक्ट. तो बस रेट पता लग गया, तो वी गॉट द सेल वैल्यू, एनीथिंग ट्रांजैक्शन वैल्यू इन आईएनआर, Hmm. इन डॉलर, एनीथिंग. पूरा रेट ही गेम का है. uh, we have done this as well. Okay. Any change in unreal exchange rate movement? कौन से हो सकते हैं एक्सचेंज रेट मूवमेंट, इफ यू कुड टेल मी. इसको देखते हुए कौन से, क्योंकि नॉन मॉनेट, जस्ट
build up a good broad perspective. Hmm. नॉन मॉनेटरी आइटम एंड हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब जिस दिन से मैंने परचेज कर लिया तब से वही रेट चलते हुआ आएगा, कोई रेट में चेंज नहीं होगा। Yeah. तो इसका मतलब कोई एक्सचेंज रेट मूवमेंट हुआ ही नहीं, क्योंकि अगर 80 पे रिकॉर्ड करते हुए आया हूँ, आई रिकॉर्ड कंटिन्यूसली रिकॉर्ड ऑन 80 ओनली। बट हाँ. अगर मैं मॉनेटरी आइटम को रिपोर्टिंग डेट पे कर रहा हूँ, इसका मतलब एट रिपोर्टिंग डेट 80 होगा, कभी 90 होगा, 92 होगा, 86 होगा, 85 होगा। तो मूवमेंट आ गया प्लस माइनस। Hmm. जो भी प्लस माइनस मूवमेंट आएगा, फॉर एग्जाम्पल द रेट गॉट इंक्रीज, तो जो भी एक्सचेंज रेट हुआ, द डिफरेंस विल गो इन पीएनएल एज अ एक्सचेंज रेट मूवमेंट, गेन और Okay. लॉस। Okay. ठीक है, ये आई टेल यू द एग्जांपल। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ मॉनेटरी आइटम। ओके, we have learned that we will translate into functional currency any transaction at a transaction date, at a transaction rate. Okay, Hmm. transaction day, transaction rate. First of Jan 20x1, I made a sale of $10,000. Let's take an example, 10,000 dinars. Okay, उस टाइम पे रेट था 2 is equals to 1, 2 dinars is equals to $1। Hmm. तो मैं तो और मैंने क्रेडिट पे सेल किया, तो मेरा रिसीवेबल क्या होगा? मेरे को डॉलर चाहिए ना, मेरा और मेरा फंक्शनल करेंसी डॉलर। दिस इज दिनार, दिस इज डॉलर, आई नीड डॉलर। 5,000. ओके, तो मेरा रिसीवेबल कितना होगा? 5,000। नाउ एट रिपोर्टिंग डेट, रेट गॉट चेंज टू 4:1। ठीक है, Hmm. तो क्या फर्क पड़ा? मेरे को रिसीव कितना हो रहा है उसमें फर्क पड़ेगा. एट अ रिपोर्टिंग डेट मेरा रिसीवेबल एज पर करेंसी शोइंग 2,500, इसका मतलब $2,500, इसका मतलब ट्रांजेक्शन डे पे $5,000 था, Hmm. रिपोर्टिंग डेट पे 2,500 हो गया, इसका मतलब $2,500 का नुकसान हो गया मेरा। जो पीएनएल में जाएगा. वो पीएल में जाएगा। डेबिट एक्सचेंज रेट एंड लॉस, टू व्हाट? टू व्हाट? क्या कम हुआ अभी? रिसीवेबल. अकाउंट रिसीवेबल, या. रिसीवेबल डेबिट होता है ना, हम्म. कम हो जाएगा। ठीक है, या. व्हाट इफ इट्स अपोजिट. हाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं आई टेल कि 1:1 हो गया, 1 दिनार इज इक्वल टू $1 हो गया, 10,000 हो गया मेरा हम्म. डॉलर। रिवर्स एंट्री, डेबिट, डेबिट AR, क्रेडिट एक्सचेंज रेट इनकम डन. और गेन, क्या होगा वैल्यू? 10,000. भाई 10,000, 5,000 ना, 5,000 तो डे वन पे रिकॉर्ड कर ही दिया मैंने, या. राइट. तो गेन तो मेरा 5,000 का ही होगा। या. Solve this along with the journal entries which I've taught. It's 2:13. You have time till 2:18. ओके.
Hello. 1 second. Yeah, done. Before saying your answer, just want to clarify um what rate you have used. The rate mentioned like 1 USD is equal to 0.90 Euro. euro. I just wanted to confirm that you use rates as per this logic, monetary item, non-monetary. Basically, as per the question, you understood which one is a monetary item or it's a non-monetary item, and based on that, you use the rate. Correct? Yeah. Which one is okay? Go ahead. What your answer? But by solving the question, I did not took that into mind, so my Okay. answer might get wrong. हाँ मैं वही कह रहा हूँ. For example, you purchased a machine. Question says that payment is due, which means debit asset, credit liability, Hmm. credit creditor. Hmm. Okay. इसका मतलब first one is the asset which is non-monetary. Second one creditor. It's a monetary item. Right. ठीक है. Now you tell me the entry on 22nd December and 31st December. I've given you the hint. If you want to change your answer, you want more time, you can tell me. You can solve again based on this logic. 1 minute. Mhm. Can you show the question? Oh yeah. पूरा थीम रेट का है एंड आइटम कौन सी है. इफ एन आइटम इज मॉनेटरी, यूज द रिपोर्टिंग डेट. ट्रांजैक्शन डेट तो यूज किया ही होगा. The day on which the transaction is incurred, then restate the functional reporting date rate. See the difference, record in P&L. If there is non-monetary component also, assess whether it's as recorded on historical cost or fair value. If the question is silent, is assume that it's historical. If it's historical, use the rate of transaction date only, which you have already done when you were restating the currency on the day it got purchased. The transaction rate is on 22nd December, right? Yeah, Yeah. So, um, is the difference 1 million? yeah, 1 million. Yeah, I think I've done right. Okay, so what are your journal entries then? Account receivable to exchange rate income 1 How million. account receivable? मशीनरी परचेज की अकाउंट रिसीवेबल कैसे आ गया? अकाउंटिंग कर किसके लिए रहे हैं? वी आर एबीसी, वी हैव परचेज द मशीन, और अकाउंटिंग एबीसी के लिए करनी है.
That's why I told you I want the journal entry. Sorry, but can you help? See, ABC purchase asset. We are ABC. We have to translate the balances in ABC functional currency. ठीक है? Functional currency is euro. We have purchased machinery. So a normal I normal entry to purchase machinery would be debit machinery, credit creditor. ठीक है? ये एंट्री देख के समझ आ रहा है कि मशीनरी परचेज की है विच इज नॉन मॉनेटरी. क्रेडिटर खड़ा हो गया. व्हाई? बिकॉज इट्स क्वेश्चन सेज दैट द पेमेंट इज due. Hmm. Creditor is non monetary, monetary, sorry. For non monetary, record Transaction. at transaction or revalue or revaluation date. If the question is silent, then use transaction date. That's what we did in morning question. Hmm. ठीक है? For monetary item, rate at reporting date. ठीक है? Yeah. पर दोनों चीज को ट्रांजैक्शन डे पे तो रिकॉर्ड करोगे ना. जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ विच इज 22 दिसंबर, उस दिन तो उसी रेट पे ट्रांसलेट होगा. Hmm. रिपोर्टिंग डेट पे देयर इज अ क्वेश्चन कि रिपोर्टिंग रेट पे करना है कि वैल्यूएशन डेट पे करना है कि ट्रांजैक्शन डेट पे करना है. ठीक है? अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हिस्टोरिकल कॉस्ट, हम हिस्टोरिकल कॉस्ट एज्यूम करेंगे. करेक्ट, यू नो दिस. Yes. Yes. एंड विल यूज द ट्रांजैक्शन डेट. Hmm. अगर मॉनेटरी है विल यूज द रिपोर्टिंग डेट. Yeah. जब रीट्रांसलेट करेंगे, जब हम डिफरेंस निकालने जाएंगे. करेक्ट, Hmm. क्योंकि हिस्टोरिकल रेट इसका मतलब 22 दिसंबर की वैल्यू भी तो 31 दिसंबर सेम ही रहेगी, क्योंकि हम नए रेट पे तो उसको वापस ट्रांसलेट नहीं कर रहे हैं. Right. करेक्ट ना. ट्रांजैक्शन डेट यहाँ पे 22 दिसंबर 22 ही शो होगा, तो उसमें तो कुछ मूवमेंट नहीं आएगा मशीनरी में. Hmm. मूवमेंट किस में आएगा? मॉनेटरी आइटम में आएगा, क्योंकि हम वापस रिपोर्टिंग डेट पे उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं. ठीक है? तो एट ट्रांजैक्शन विच इज 22 दिसंबर, 1 यूरो, 1 USD इज इक्वल टू 0.90 यूरो. ओके, हमें यूरो चाहिए. और क्वेश्चन में लिखा हुआ USD 20 million, let's say 20,000. Okay, this into this divided by 1, 18,000. Yeah. तो डे वन पे मेरी एंट्री क्या बनी? नाउ टेल मी द एंट्री. We did the transaction. So machine to cash कैश कैसे? because we are paying. कहाँ पे किया? अभी अभी तो हम लोग 22 पे ही खड़े हैं. डिलीवरी हुई है 22 पे.
और 30 जनवरी को भी पेमेंट ड्यू है इसका, और हमें तो अकाउंटिंग 31 दिसंबर की 31 दिसंबर तक ही करनी है। इसका मतलब उसके 1 महीने बाद तक पेमेंट ड्यू है, तो कैश क्यों होगा, क्रेडिटर होगा ना। राइट। 18,000 डॉलर, 18,000 डॉलर। रिपोर्टिंग डेट पे रिपोर्टिंग डेट पे ट्रांजैक्ट मशीनरी हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे करें तो वो तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं उसमें। मॉनेटरी आइटम को रिपोर्टिंग डेट पे ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। उस दिन क्या रेट चल रहा है? 195, 10.95, ठीक है। डॉलर्स कितना था? 20,000, फिर इंटू फिर 19,000। या मेरा क्रेडिटर एंड बड़ा है। एंट्री मेरा वुड बी द सेम हाउ एंट्री वुड बी से? because at this date we are not paying. We are still paying on January. So at the reporting date, as you said, our creditor is increasing, so our liability is increasing. या तो डेबिट वुड बी लॉस ना, लॉस ऑन एक्सचेंज रेट, एंड क्रेडिट वुड बी लायबिलिटी। बाय हाउ मच? 1 million. You understood this entry, no? Yes, sure, no? This one. The, Yes. the day on which we entered into contract, this was my account receivable. At reporting date, my account receivable were 10,000, 5,000. It got increased by 2,500. Sorry, 5,000. My receivable got increased. Debit would be receivable, credit would be income. Now, in this case, my liability is getting increased. The debit would be lost, na? And credit would Yeah. be my liability by Yes. 1,000. Right. Understood. Now, the balance sheet. Presentation currency. सारे assets और liability will be at reporting date. Income और expenses सारे average rate. Okay. और equity transaction will be on transaction date. ठीक है। ये इस चैप्टर में कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर एट व्हाट रेट वी हैव टू अकाउंट, और उसी के बेस पे जो एक्सचेंज रेट मूवमेंट होगा उसको पीएनएल में रिकॉर्ड करना है। इट इज एज सिंपल एज दैट। और वो ध्यान रखना है कि कौन सा आइटम भी है, क्योंकि उस जिस हिसाब से यू डिटरमाइन द आइटम, as per that you will determine at which rate I have to use that. Once you determine the rate, exchange rate movement, exchange rate movement book on pnl, you're done. Right. Understood. Is the transaction and average rate same only? No, basically I think it's um, for income and expense you have to take average rate, not transaction rate. I don't know why they have written the transaction rate. Okay. It's an average rate.
and you will be given in question the average. You don't have to calculate your average because it's not your work to determine average rate. Actuarials play better role than accountant. Right. Who are actuarials? They are a type of person that do analysis of the companies, like all Basically, reports and all. it's a professional respected qualification where a candidate is capable enough to assess the forecast, interest rate, inflation rate, exchange rate movement, and lot of other assumptions as well. Okay, those are known as actuarial. Yeah, this is the end of the chapter. You just have to remember the dates. Let's start with let's do a few quizzes. Because of this movement ना, exchange rate movement, आजकल सब चीजें इतनी इंटरनेशनली इतनी इजीली हो गई है कि कंपनीज आर ट्रेडिंग मोस्टली इन इंटरनेशनल करेंसी. और अब आजकल तो रॉ मटेरियल लेबर्स भी यूजुअली दे फ्रीलांस फ्रॉम फ्रीलांस, या तो मटेरियल भी इंटरनेशनल ट्रेडर से ही परचेज करते हैं, इंटरनेशनल सप्लायर्स. लेबर्स भी फंक्शनल कंट्री की जगह दे फ्रीलांस फ्रॉम इंटरनेशनल टैलेंट. तो सब इंटरनेशनल करेंसी में ट्रेड होता है. तो इट्स हैज बीन अ बिग टास्क क्योंकि you just see in 1 year that in our example AR got increased from 25 5,000 10,000. That's how the volatile exchange rate is. सोचो कंपनीज के, तो हमारा तो सिर्फ 2500 का बेसिकली जो ट्रांजैक्शन था, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के एक्सपेंड ट्रांजैक्शन होते हैं. तो इवन अ चेंज इन 0.01 परसेंटेज, आई मीन 0.01 rate, it can affect company's finance. So Right. what companies have started, they have same as provision. Provision में हम क्या कर रहे हैं? We are considering the worst case scenario पहले से and booking the provision. Because provision is what? Uh, it's not a confirmed liability that is going to incur. It's probable liability. Yeah, it's a more than 50% chance that it's liability going to be incurred. इसका मतलब क्या हो रहा है? हम टेक्निकली हम एडवांस में चल रहे हैं ना. We Yes. are considering the worst case scenario. So companies, what they have started, they have maintaining foreign currency translation reserves for extended moments. कि कभी उनको लॉस हुआ तो दे आर वेल प्रिपेयर्ड विद द रिजर्व, उनके पास इनफ मनी है. Hmm. करेक्ट. और वो जो रिजर्व होता है वो ओसीआई में रिकॉर्ड होता है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव. Okay. अंडरस्टूड. Yeah. रिजर्व मेंटेन करने का लॉजिक ही होता है, कोई भी रिजर्व हो, कैपिटल रिजर्व हो, प्रोविजन रिजर्व हो, बैड डेट रिजर्व हो, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व हो. रिजर्व इज समथिंग, इज यू नो इज अ शील्ड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द वर्स्ट केस सिनेरियो. बैड डेट रिजर्व, बैड डेट क्यों क्या हो सकता है, क्यों होगा? व्हाट इफ रिसीवेबल इन पे. तो हम उसका रिजर्व पहले से मेंटेन करके चलते हैं बेस्ड ऑन आवर असेसमेंट कि अच्छा, आउट ऑफ 100 5% ऐसे होंगे जो बैड डेट हो सकता है. तो मेंटेनिंग 5% ऑफ रिजर्व पहले से. ठीक है. Yeah. Answer, I think it's B. Is it right?
Uh, what is the question? First question. First one now would be not relevant in determining. First one is relevant sale price. Second is also relevant material labor. I told you na this one. But in that only it was written that mainly related to. Mainly influences. Here also they have written na mainly. Here फाइनेंसिंग भी है सेल प्राइस भी है the most financeable stable currency that is frequently used in business transaction ये तो कंडीशन ही नहीं आंसर इज सी सॉल्व टू True. ट्रू Yes. अरे जस्ट नाउ आई टोल्ड यू ना फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व इट्स रिकॉर्डेड इन ओसीआई But the difference that we find out we include in SOPL. No? हाँ तो दैट इज फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट डिफरेंस इट्स नॉट अ रिजर्व you are right if it would have been exchange rate movement then yeah true था but it's a reserve question is asking for reserve Then it's false. हाँ I want you to solve it out. Test your understanding one with the logics that we have understood. I think now you can do it. And they are asking for complete journal entry. Must question. Basically, conceptual clarity question. If you are able to pass journal entries, then you are conceptually clear.
I think I'm done. Yeah, what is the Um, answer and generate? for the first, that is historic date, on the transaction date, um, my general entry is that for the purchase, it's purchased to creditor 30,000. Mm-hmm. And on the settlement, I got the amount, but I am confused about the JE on the settlement date. Okay, forget about this question. If I would have told you that if I'm paying my old creditors, what would have been the journal entry? Cash to payable slash creditor. Correct? Yeah. So at TR date, transaction date, you told the dollars were 30,000. Okay. Huh, 30,000. Yeah. What is the reporting date? Dollars? Dollar amount? 30857. ठीक है. This means simply logically, जिस दिन मैंने purchase किया, my entry, Hmm. my payables were 30,000. At the Hmm. settlement date, I have to pay $30,857. इसका मतलब कहीं ना कहीं I'm paying more. Hmm. I'm paying 857 more. Hmm. Debit would be my payables. How much at the reporting date? My payables were 30 only, so debit would be payables. I'll nil out my payables. Credit would be my cash. How much I'm paying cash? 30857. Debit would be loss on exchange gain. Loss on exchange rate. How much? 857. This is a journal entry. Think from a logical point of view. On transaction date, मेरा payable was 30,000. Hmm. जब पे किया, I end up paying 30857. कहीं ना कहीं Hmm. I'm paying more 857. Hmm. If I'm paying more 857, इसका मतलब क्या? It's my loss. Which loss? Exchange rate loss. Right. ठीक है. So we cannot record it like loss on exchange 30857 uh, to cash Sorry, loss on. Okay, loss on exchange 30857 to cash, like we are not recording payables. cash with the same amount. No, but we are not paying. नहीं नहीं, क्या ये क्या सेंस है इस एंट्री का? I'm asking like ऐसा हो सकता है. अगर मैंने कुछ परचेज किया, Hmm. पेबल होगा मेरे बुक में, और मैं पे कर रहा हूँ तो वो पेबल कम होगा. डेबिट लॉस कैसे आ गया ये इतना बड़ा? Right. Yeah. यू अंडरस्टैंडिंग द एंटायर टॉपिक क्या हो रहा है? इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में डील हो रहा है. रेट्स हमको दिया हुआ है. कैंडिडेट इज गिविंग अस द गाइडेंस कि कौन से आइटम को किस रेट पे रिकॉर्ड करना है. वी आर डूइंग एग्जैक्टली दैट व्हाट इट इज, Hmm. व्हाट इज बीइंग टोल्ड. ठीक है. रेट को ट्रांसलेट करने के बाद वी गॉट टू नो इट ऑन डे वन आवर पेबल वाज 30,000. रिपोर्टिंग डेट पे इट गॉट 30857. कहीं ना कहीं आई एम पेइंग मोर. व्हाई? बिकॉज आई हैव रीच्ड, आई हैव ट्रांसलेटेड ऑन रिपोर्टिंग डेट. ठीक है ना, रिपोर्टिंग डेट पे ट्रांसलेट किया, तभी एक्सचेंज रेट मूवमेंट आया ना. Yes. तो इट्स अ लॉस ना, इट्स एन एक्सचेंज रेट लॉस. Yeah, understood. You can either use the term foreign exchange loss from bookish point of view if you don't want to use exchange rate loss. ठीक है. So yeah, I think we are done with the agenda of today. Tomorrow we'll meet again with a few theory topics and we'll complete the theory topics. Then we would be left with four important topics. One is consolidation. We need entire day for that. Financial instrument, one entire day. So one weekend, the financial instrument and consolidation. One more weekend for taxation and cash flow. If time permits, we'll solve one big consolidation question.
for you to understand how do we solve and how how examiner want us to solve the question in exam, along Okay. with entire working, drafting, explanation, everything. We'll solve Right. full 20 mark question, latest examination question, if time permits. Okay. So I need 2 more weekends. We'll be done with the syllabus. Okay. Okay. So yeah, I think we can wrap up for today. Thank you. Thank you for joining. Thank Bye. you. Bye.